Hello friends, welcome to our new video. Let's try to solve the today's problem. Before that, if you guys are new to our channel or if you did not subscribe to our channel yet, then please go and subscribe our channel and hit the bell icon as well so that you can get the notifications of our new videos. Okay, so the today's problem is bigger pencil. Okay, so let's try to solve this problem. Okay, so here you can see that we have given a problem statement. The problem statement is Newton has n pencils of variable length L1, L2 up to Ln. Okay, and he wants to have three specific lengths pencil of length that is X, Y, and Z. If he doesn't have these length pencils in his n pencils stash, then he will create it. Okay, then Newton knows magic that he can do the three magic tricks to change the pencil length. Okay, so here we have given the three magic tricks. Okay, that is the first magic trick is he can choose any pencil and increase its length by 1. It consumes 1 second for his time. Okay, the second magic trick is he can choose any pencil and decrease its length by 1 and it consumes 1 second of its time. Okay, and the third magic trick is he can choose any two pencils of length Li and Lj and merge them to create a single pencil of length Li plus Lj. It consumes 10 seconds of his time. Okay. Since Newton doesn't like to waste time, he wants you to tell him the minimum time needed to get pencil with the length X, Y, and Z. Okay. So in this problem, in input, we have given the four integers that is n, X, Y, and Z. Okay, and the next n line contains single integers that is L1, L2 up to Ln. Okay, and we have to print the minimum time needed by the Newton. Okay, so in this problem, what we can do? Okay, so यहाँ पे इस प्रॉब्लम में हमको n नंबर ऑफ पेंसिल्स दी है, दैट इज n पेंसिल्स दी है और जो n पेंसिल्स है उनकी लेंथ दी है, दैट मीन्स थ्री थ्री पेंसिल्स की स्पेसिफिक थ्री पेंसिल्स की लेंथ दी है हमें, दैट इज एक्स वाई एंड जेड. ओके, एंड हमको जो हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है कि ये जो लेंथ दी है थ्री पेंसिल्स की स्पेसिफिक, तो हमको ये चेक करना है कि जो हमको n नंबर ऑफ पेंसिल्स दी है वो पेंसिल से हम ये जो लेंथ दी है ये लेंथ अचीव कर सकते हैं क्या. मतलब सपोज किसी पेंसिल की लेंथ अगर 4 दी है, लेट सपोज, तो हमको ये चेक करना है कि जो n नंबर ऑफ पेंसिल्स है, जो n पेंसिल्स रहेंगी उससे हम जो 4 नंबर की लेंथ है पेंसिल की, वो हम पेंसिल क्रिएट कर सकते हैं क्या, 4 लेंथ 4 की पेंसिल. ओके, by using these three magic tricks, that is the first magic trick. We have to check that जो जो पेंसिल है उस पेंसिल में से हम क्या करेंगे, लेंथ इंक्रीज करके देख सकते हैं बाय 1 या फिर डिक्रीज करके देख सकते हैं बाय 1. हमको वो लेंथ अचीव कर सकते हैं क्या, या फिर हमको कोई जो n नंबर ऑफ पेंसिल्स है उसमें से कोई भी दो पेंसिल्स हम ऐड करके, मतलब उनका एडिशन करके हम ये लेंथ लेंथ के इक्वल कर सकते हैं क्या, ये हमको चेक करना है. ओके, दैट मीन्स let's see the sample input for this. Okay, okay, so here you can see that in this sample input, let's try to understand. Okay, so here you can see that in this problem, what we can do, we have given the n number of pencils, that is this one. Okay, and we have given the length of the three specific pencils. Okay, and we have to check that if this length, given length, is present in this
n number of pencils or not, और if the length, अगर ये जो लेंथ दी है ये इस n नंबर ऑफ पेंसिल्स में प्रेजेंट नहीं है तो वो हमको क्रिएट करनी है। उसके लिए हमें क्या करना है, थ्री ऑपरेशंस फॉलो करना है। ओके, दैट इज थ्री मैजिक ट्रिक्स फॉलो करना है। ओके, सो फर्स्ट जो मैजिक ट्रिक है उसमें क्या करना है, अ, जो पेंसिल है इन, उसको क्या करना है, गिवन पेंसिल इंक्रीज करना है। ओके, सो गिवन पेंसिल इंक्रीज करना है, ये फर्स्ट मैजिक ट्रिक है। ओके, एंड सेकंड मैजिक ट्रिक में हमको क्या करना है, वन से इंक्रीज करना है। ओके, एंड सेकंड जो मैजिक ट्रिक है उसमें हमें जो पेंसिल है वो डिक्रीज करना है वन से। ओके, एंड थर्ड जो है, ओके, थर्ड में हमें क्या करना है, कोई भी जो एन नंबर ऑफ पेंसिल्स है उसमें से कोई भी दो पेंसिल्स हमको, दो पेंसिल्स के हमको एडिशन करना है। दैट इज, लेट सपोज दिस इज एन आई प्लस एन जे। ओके, सो ये दोनों की एडिशन करना है। ओके, एंड चेक करना है कि ये इसका जो एडिशन है वो गिवन लेंथ जो है हमें थ्री, जो थ्री स्पेसिफिक पेंसिल्स का वो मिलता है क्या, हमें ये चेक करना है। ओके, सो इस एग्जांपल में हम चेक करते हैं कि ये जो n नंबर ऑफ पेंसिल्स है इसमें ये थ्री लेंथ्स प्रेजेंट है क्या, नहीं है। यहाँ पे चेक किया हमें, हमने यहाँ पे 99 है, 81 है, 40 है, 30 है, 22 है। ओके, बट ये थ्री जो लेंथ्स है दैट इज 100, 90 एंड 80, ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है, ये लेंथ हमें क्रिएट करना है, चेक करना है कि हम क्रिएट कर सकते हैं क्या ये लेंथ, ये नंबर ऑफ पेंसिल से। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट पेंसिल है 99। ओके, सो हम फर्स्ट ऑपरेशन यदि चेक किया तो फर्स्ट ऑपरेशन में क्या करना है, हमें इंक्रीज करना है पेंसिल वन से। ओके, सो फर्स्ट पेंसिल है 99। ओके, तो उसको यदि इंक्रीज किया वन से तो उसकी लेंथ हमें मिलेगी 100। दैट इज, ओके, सो दैट इज दिस वन। सो एक हमें पेंसिल मिल रही है। ओके, एंड जो इंक्रीज करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड लगेगा। लेंथ मतलब कोई भी इसकी वन से इंक्रीज यदि करेंगे तो उसके लिए हमें 1 सेकेंड टाइम लगेगा, वन से डिक्रीज करेंगे तो उसके लिए भी 1 सेकेंड लगेगा, और यदि दो पेंसिल को ऐड करेंगे तो उसके लिए हमें 10 सेकेंड्स लगेंगे। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। ओके, सो इसके लिए हमें कितना, 1 सेकेंड लगा, राइट। ओके, नाउ द सेकेंड इज, सेकेंड पेंसिल इज 81। ओके, सो 81 से हम कोई पेंसिल क्रिएट कर सकते हैं क्या, यस, दैट इज 80। ओके, सो 81 में से यदि हमने वन डिक्रीमेंट किया, दैट इज डिक्रीज किया, तो 80 मिलता है हमको। सो यहाँ पे 81 में से सेकेंड मैजिक ट्रिक हम फॉलो करेंगे। सो 81 में से वन माइनस किया, सॉरी दिस इज 81 नॉट 88। ओके, 81 में से वन माइनस किया तो हमको 80 मिल रहा है। ओके, दैट इज दिस लेंथ। ओके, सो इसके लिए भी हमको टाइम लगा 1 सेकेंड। ओके, अभी चेक करते हैं कि जो गिवन मतलब एन नंबर ऑफ पेंसिल्स है उसमें से कोई पेंसिल है क्या जिससे हम ये लेंथ को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो ये जो लास्ट थ्री पेंसिल्स है उससे हम ये लेंथ क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज 90। ओके, वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, पहले हम दो दो नंबर को हमें ऐड करना है, दैट इज ये जो थर्ड मैजिक ट्रिक है उसमें हमने उसमें क्या करना है, दो नंबर्स ऐड करने। ओके, सो फर्स्ट हम ये दो नंबर्स ऐड करेंगे, देन
इसका आउटपुट जो है ओके 40 प्लस 30 कितना आता है 70 प्लस 22 तो इसका आउटपुट 92 आता है। सो हम ये 92 से ये 90 जो लेंथ है ये इसको क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे? फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो ये लास्ट है 22 पेंसिल, उसमें से हम क्या करेंगे, अ, 2 पेंसिल्स मतलब 2 सेंटीमीटर कम करेंगे पेंसिल। ओके, दैट इज 22 में से पहले हम क्या करेंगे, 1 डिक्रीमेंट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 21। ओके, अगेन 21 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें आउटपुट दैट इज वैल्यू मिलेगी 20। ओके, सो यहाँ पे हमने 2 बार डिक्रीमेंट किया है तो इसके लिए भी हमें कितना टाइम लगा, 1 टाइम, 1 सेकेंड। और यहाँ पे अगेन हमने डिक्रीमेंट किया तो उसके लिए भी हमें 1 सेकेंड टाइम लगा। ओके, सो दैट इज 1। सो दिस 1 प्लस दिस 1 प्लस दिस 1 प्लस 1। ओके, सो हमें यहाँ पे 20 मिला। ओके, सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 40 और 30 को ऐड करेंगे और ये 40 और 30 कितना होता है, 70। ओके, और अभी 70 को हम 20 में ऐड करेंगे, दैट इज क्योंकि हम दो दो नंबर को है ऐड करना है। ये थर्ड जो मैजिक ट्रिक है उसमें हमें मेंशन किया है कि दो दो नंबर को हमें ऐड करना है। तो 70 प्लस 20 किया तो हमें आउटपुट मिल गया 90। ओके, सो यहाँ पे हमने किया, क्या किया, 2 बार एडिशन किया, यहाँ पे 1 बार किया और यहाँ पे 2 बार किया। तो ये 2 नंबर के एडिशन के लिए हमको टाइम कितना लगता है, 10 सेकेंड्स। तो यहाँ पे 10 सेकेंड टाइम लगा हमको और इस ऑपरेशन के लिए भी हमें 10 सेकेंड टाइम लगा। ओके, सो द टोटल टाइम जो है हमको कितना लगा, ये जो लेंथ है, ये लेंथ हमको टोटल अचीव करने के लिए कितना टाइम लगा, ये 10, दैट इज 10 प्लस ये 10, 10 प्लस 10, देन ये 1 1 1 एंड 1 दैट इज ये 4, that is plus 4. Okay, so equals to 10 plus 10 20, 20 plus 4 that is 24. Okay, so this is the output for this problem, you can see here. Okay, so this is the logic to solve this problem. Okay, so now let's try to write the code for this problem. Okay, so first I'll remove this. Okay, okay, now let's try to write the code for this problem. Okay, so first what I can do, I have to take the input from the user. Okay, so for that I'll use the scanner class to take the input. I'll write scanner. Okay, scanner sc equals to new scanner, then system dot in. Okay, then we have to take the 4 integers as an input. Okay, okay, so what I can do, I'll declare the variables here inside the main class. Okay, so for that I have to write the static. Okay, so that I can access it anywhere in the this main class. Okay, so I'll write static, then integer, then uh, first number is n, we have to take n. Okay, then 3 numbers, that is x, then y, and then
z. Okay, so this we have declared these four numbers. Okay, now we'll declare one array, so that I'll write static integer. Let's suppose array नाम देते हैं उसको. Okay, then what I can do, I'll declare one minimum variable. So uh, I'll write static, okay, integer min. ओके एंड इस मेन वेरिएबल को मैं क्या मैक्स वैल्यू दे दूंगा. ओके, वो कैसे देंगे हम? सो सिंपली यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू. ओके, सो एक मैक्स वैल्यू हमने ये मिनिमम को इनिशियलाइज कर दी. ओके, now inside this main class I'll take the input. Okay, so first I'll take n number, n equals to sc dot next int. Okay, then the next numbers, that is x equals to sc dot next int, then y equals to sc dot next int, and then z equals to sc dot next int. Okay, so हमने यूजर से चार नंबर्स इनपुट ले लिए. अभी क्या करेंगे, हम एरे को इनिशियलाइज करेंगे. सो फॉर दैट हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरे इक्वल्स टू न्यू array equals to new int. ओके, एंड इसमें हम क्या करेंगे, एरे की साइज को पास कर देंगे, दैट इज n. ओके, एरे को इनिशियलाइज कर दिया. अभी उसके एलिमेंट्स हम यूजर से इनपुट लेंगे. सो फॉर दैट यहाँ पे मैं एक फॉर लूप लिखूंगा, इंटीजर फॉर इंटीजर I equals to 0. Okay, then I is less than n and I plus plus. Okay, and inside this simply I'll write array of I equals to sc dot next int. Okay, so array के यहाँ पे हमने यूजर से इनपुट ले लिया. ओके, नाउ अभी हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे हम. ओके, सो यहाँ पे लिखता हूँ मैं फंक्शन. ओके, सो आई विल राइट static void, and let's suppose I'll give the name dfs for this. Okay, and inside this I'll pass the arguments, that is integer. Let's suppose integer कोई भी नाम दे सकते हैं. ओके, सो कोई भी नाम दे सकते हैं. लेट्स सपोज हम करंट नाम देते हैं इसको. ओके, integer current, then I'll write integer a, then integer b, then integer c, okay, and at the end again we have declared one. Okay, let's suppose integer will give the name answer for this. Okay, so I have created one function here. Okay, inside this function what I can do, I'll check that if the current is equals to n or not. Okay, and if the current equals to n, then what I can do, I'll write the one more condition, that is if a equals to 0 or b equals to 0 or c equals to 0. Okay, okay, and if this is true, then simply I will return. I'll write return
Okay, and in else part, what I can do, simply I'll add this आंसर को मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा किसके साथ, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको यहाँ. ओके, सो फॉर दैट हम यहाँ पे मैथ डॉट एपीएस फंक्शन यूज करेंगे. okay, which will return the positive integer value. Okay, so inside this what I can do, I'll write x minus 1a. okay, x को फर्स्ट जो नंबर है a उसमें से माइनस करेंगे. ओके, देन हम क्या करेंगे, प्लस उसको ऐड करेंगे मैथ.abs और y को माइनस करेंगे y माइनस b. ओके, और अगेन इसको ऐड करेंगे मैथ डॉट abs वैल्यू निकालेंगे, दैट इज थर्ड, दैट इज z माइनस c. ओके, एंड ओवरऑल ये जो है इसमें से 30 को माइनस कर देंगे. ओके, सो एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिनिमम को मिनिमम इक्वल्स टू मिनिमम वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे. सो विल राइट मैथ डॉट मिनिमम. ओके, एंड इनसाइड दिस सिंपली हम पास करेंगे, दैट इज फर्स्ट मिनिमम को पास करेंगे एंड देन आंसर को पास करेंगे. ओके, सो दैट हमको मिनिमम वैल्यू मिल जाएंगी और हम क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे. ओके, ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू, ओके दिस इज ओके. सो अभी हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करेंगे. ओके, सो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे dfs. ओके, क्योंकि हम ये रिकर्जन यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको हमें रिकर्सिव कॉल करना पड़ेगा इस फंक्शन को. फॉर दैट यहाँ पे हम लिखेंगे अभी दैट इज करंट प्लस 1 कर देंगे. ओके, एंड यहाँ पे हम पास करेंगे a, देन b, देन c एंड देन आंसर को. आंसर ओके, ओके, सो लाइक दिस हम इसको इस फंक्शन को 4 टाइम्स कॉल कर देंगे. सो अगेन ये dfs, अभी अगेन यहाँ पे करंट प्लस 1 कर देंगे, कॉमा अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम, a प्लस एरे ऑफ करंट कर देंगे. ओके, एरे ऑफ करंट, देन विल राइट b कॉमा c कॉमा आंसर. ओके, और इसमें क्या करेंगे हम, प्लस 10 को ऐड कर देंगे. ओके, अगेन विल राइट dfs, अगेन विल राइट करंट प्लस 1. ओके, देन विल राइट a कॉमा देन b प्लस एरे ऑफ करंट. ओके, देन कॉमा c, देन कॉमा आंसर और इसमें प्लस 10 कर देंगे. ओके, and again we'll call the dfs, and inside this again we'll write current plus 1 comma a comma b comma c plus array of current कर देंगे. okay, c plus array of current, and at the end जो आंसर है, आंसर प्लस 10 कर देंगे. ओके, सो लाइक दिस हम इस फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल किया हमने यहाँ पे. ओके, नाउ अभी क्या करेंगे, हम मेन फंक्शन में जाएंगे. ओके, सो हियर, ओके, सो inside this main function what we can do, we'll call this function. okay, so I'll write dfs, and initially I'll pass the value that is zeros. okay, so that is 0 comma 0 comma 0 comma 0. okay, so
जीरो को पास किया और एंड में हम प्रिंट कर देंगे मिनिमम को। ओके, सो फॉर दैट आई राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंड मिनिमम को प्रिंट कर देंगे। ओके, सो दिस इज द कोड फॉर दिस प्रॉब्लम। अभी इसको क्या करते हैं, रन करके देखते हैं ये वर्क होता है क्या सॉल्यूशन। ओके, सो simply I'll copy this input and let's test it here. Click on run. Okay, and let's see. Okay, it shows an error. Oh, DFS cannot be applied to int. Okay, 1 2 3 4. Okay, we have to pass the 5 zeros inside this. Okay, as we have taken the 5 arguments here in this function. Okay, so now let's see. Click on run. Okay, now output is showing. Okay, here you can see that output is 24 and required output is as well 24. Okay, now let's try for this second sample input. So I'll just copy this and let's paste it here. Mm, okay, so click on run. Output for this should be 0. Okay, so the output for this sample input should be 0 because here you can see that the length is 10 9 and 8. Okay, which is already present in the n number of pencils, so we don't need any time to create this length. Okay, for that the output for this sample input should be 0. Okay, so let's see. Okay, here you can see that output is 0, which is correct. Now what we can do, let's try to submit the code and let's see whether all the test cases will pass or not. So click on submit. Okay, now here the test cases are running. Okay, so here you can see that all the test cases has been passed. Okay, so there is another way as well to solve this problem. Okay, to in second way, what you can do, simply here uh, you can find the minimum values, okay, by using math.minimum function. Okay, and you can pass this inside this math.minimum function. Okay, and you can compare this with the answer. Okay, answer variable, which is this one. Okay, so for that as well you can get the output for this problem. Okay, okay, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।